A very warm and cheerful morning to all my children. How are you all, my dear children? I hope you are all keeping fit and fine. Okay, so here I am. My name is Jasmine and I am going to teach you English. Yes, so from today onwards, we will be continuing with this subject. Okay, so as you all know, within your previous chapter, we had learned about the mice that ate iron. Yes, some of you have seen that video. Okay, so you have learned about what is this story all about. So the mice that ate iron. This is the second part where I am going to teach you about the dictionary. That is the difficult words. Okay, so here we are going to cover up few words. The first one we have is abroad. Abroad word is an adverb. Okay, when you say that I am going to abroad, you have the meaning on the screen, that is in or to a foreign country. Okay, so while you are traveling to a foreign country, in the image you can see, we say yes, I am going abroad for my studies. Okay, so take your textbook with you. On your textbook, come over to page number 35. Okay, there you can see the word on the second paragraph, second line, the top of Naduk's travels abroad and his business. Yes, so Lakshman and Naduk, in this story, Naduk told Lakshman that yes, this is a business that I am doing abroad and I am going to abroad. Okay, so that is the word that we found, that is abroad in the dictionary. Okay, so let's go to the second word. The second word we have is beam. Okay, beam is a noun. Have you seen beam? You would say, ma'am, beam क्या होता है? हमने तो नहीं देखा. Yes, you have seen it. See the image. Have you seen beam? Yes. Okay. So what is beam? For your roof, okay, in your homes, in every buildings, we have beam. And this beam is what? It's a sort of, it can be a wood beam, okay, it can be iron, okay. So we have iron beam. In this story, we are learning about iron beam, okay. So come over to page number 34 on your textbook, okay. Second paragraph, last line. I'm just reading it out. All that he was left with, which was of some value, was a heavy iron beam. Yes. So Naduk, you know this story, yes? Naduk was full of debts. He didn't know. इतने कर्ज पे आ गया, उसको नहीं पता था कि भाई मेरे पैसे सारे मैं गवा चुका हूँ, मैं भी कैसे जीऊँगा? सिर्फ मेरे पास जो बाकी रहा है मेरे घर पे, वो है एक iron beam. Okay, so he said, I have only the iron beam left with me. And फिर वो क्या करता है? You know this story, right? ये iron beam वो अपने दोस्त को लक्ष्मण को बोलता है कि तुम संभाल के रखना. Yes, okay. So that is the word that we found in the textbook, that is beam. Okay, clear? Let's go to the third one. The third word we have carrying on. Okay, this is a phrasal verb. Phrasal verb यानी जब आप कोई भी स्टेटमेंट को कोई भी सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं, तब अपन वहां पे उसको वर्ब में बनाते हैं. We make it a phrasal verb, to make it a phrase word. Okay, so that we are having carrying on. Okay, and here you have the meaning, continuing. अच्छा, आपने भी अपने दोस्तों को बोला होगा, सपोज आपका फ्रेंड अगर स्कूल में नोट्स लिख रहा है, ठीक है, आपने उसको बोला होगा कि यार प्लीज मेरी मदद थोड़ी कर देना. फिर वो आपको भाग ही नहीं दे रहा होगा, लिखता जा रहा होगा अपना बुक्स, और आप उसको बोलोगे ओके यू कैरी ऑन, है ना? यस, सो देयर वी आर यूजिंग कैरिंग ऑन, यानी कि अपन जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना. ओके, सो हियर वी हैव sometimes we are working, so we are continuing with our work. Now, in this chapter, open your textbook, page number 35. On 35
गया। Many years passed. Naduk went far and wide, carrying on his trade. वो अपना जो बिजनेस था वो कंटिन्यू करता रहा। इतने सालों बाद भी वो अपना बिजनेस पे चालू रखा उसने। ठीक है, that is carrying on. Here we are going for the third word, that is debt. Debt word is a noun. आपने सुना है debt? When you say debt, the Hindi word meaning is कर्ज. Okay? आप कोई भी चीज से उधार लेना. Okay? कर्ज, that is debt. The sum of money that one borrowed and has to pay. आपने किसी से कुछ लिया और वो चीज आपके ऊपर एक बोझ बन गया. ठीक है? Then we call it debt. The debt word you can find it on page number 34 on your textbook. Okay? The second line. See, as time went by, his business became so bad. And what he did? He lost all his money, but also got into debt. He not only lose all his money, but he got into debt. वो बहुत बड़े कर्ज पे आ गया. Okay, so he was full of debt. The next word we have is fault. What do you mean by fault? Fault. Yeah, here we have the meaning responsibility of something wrong. Okay. अच्छा बच्चों, आपके पास घर पे टॉयज होंगे? Yes. Okay. तो suppose आपके पास एक You have this vehicle with you, okay? आपके पास एक कंस्ट्रक्टेड vehicle है. और क्या हुआ? आप दुकान पे लेने गए तो उसने आपको डेमो करके दिखाया. ठीक है? ये टॉय इधर से बटन दबाओ, ये ऐसे ऊंचा हो जाएगा. आप बहुत खुश हैं, आप घर लेके आए. फिर क्या हुआ? जैसे आप घर लेके आए, आपको पता चला कि अरे अंकल ने तो बटन दबाया तब तो चल रहा था. मैं घर लेके आया, मैंने बटन दबाया तो ये ऊंचा ही नहीं हो रहा. तो आप क्या बोलोगे इसको? You will say there is a fault in this toy. Yes, तो यही है. When you say fault, that is something wrong. Okay. Now you can find this word on page number 35. Okay, 35. We come over to the fourth paragraph. We have it is not your fault that the mice ate up my bean. ये कौन बोलता है? कौन बोलता है ये? Yes, नाडुक बोलता है. नाडुक बोलता है कि अरे क्या बात कर रहे हो? मेरा जो बीन मैंने जो तुम्हें संभाल के रखने दिया था वो नहीं है, वो खराब हो गया. अच्छा, वो माइस खा गया. तो नाडुक बोलता है अच्छा वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो माइस खा गया ना, तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो? ऐसे लक्ष्मण को बोलता है. ओके, so that is fault. Next, coming over, you have the word fetch. Okay, fetch meaning is to be sold for a particular price. Fetch क्या होता है? जब आप कोई भी particular price पे, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्टोरी के साथ अगर ये वर्ड रिलेट किया जाए तो fetch क्या होता है? यहाँ पे जब नाडुक लक्ष्मण के पास आता है कि दोस्त क्या तुम मेरे बीन को लौटा दोगे जो मैंने तुम्हें संभाल के रखने दिया था? तो लक्ष्मण क्या बोलता है? लक्ष्मण बोलता है अरे पता नहीं वो कहाँ है, मुझे लगता है मेरे घर में माइस ने खा गया होगा ये तुम्हारा बीन, है ना? ये जवाब देता है. तो उसने क्यों ऐसा जवाब दिया? क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये बीन, ये आयरन बीन, अगर if I keep it more safely with me, I can fetch more price. मैं इसको ज्यादा पैसे में, इसको मेरे को इससे अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे. ओके, तो उस लालच में आके वो अपने दोस्त को क्या बोलता है? He says, I think that your mice, the mice might have eaten your iron bean. Okay, so झूठ बोलता है. So why the fetch means to be sold for a particular price. Next one we have gathered. Okay, gathered, gather, gathering. ये वर्ड्स तो आपने स्कूल्स में सुना ही होगा, है ना? आपको बोलते हैं ना gathered in your
मैम मैंने तो होमवर्क कर दिया, ठीक है। फिर मैम जब आपको चॉकलेट देती है, आपकी तारीफ करती है क्लास में, तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि अरे यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाट यू फील, यू हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्टी। यहाँ पे भी देखो द फॉक्स इज वेरी गिल्टी, इज हैविंग अ सॉरी फेस। यस, so that is the meaning of guilty. See, the guilty word you can find it on your page 35 on your textbook, okay. From there, fourth last paragraph, Lakshman felt very guilty. Not only had he got away with his lie, but Naduk seemed to believe him. लक्ष्मण को कब बुरा लगा? उसको बुरा लगा तब जब उसने नाडुक को बोला कि दोस्त मुझे नहीं पता तुम्हारा बीम कहाँ है, शायद चूहा खा गया होगा, है ना। Then what happens? Naduk believes, yes, मेरा दोस्त तो सही बोल रहा है ना। So that beliefs makes him feel more guilty. The next one we have hawk. Hawk is a bird, a big bird, okay, and this bird kills other creatures for food. Here you can see this is a hawk, okay. This is a bird that hunts creatures. This word you can see it on your page number 36, okay. On page 36 he says, Naduk replied, if the mice at Lakshman's place can eat up an iron beam, then hawk can carry off a boy. वो बोलता है कि हॉक ने शायद है ना तुम्हारे बेटे को लेके गायब हो गया है। It's not me, आपको ये स्टोरी पता है, right? So at the ending there is a part जब वो बोलता है कि यार मेरे पास ना बीम है, तो नादुक बोलता है ना मेरे पास तुम्हारा बेटा है। Even I don't have your son with me. The hawk might have carried him away. Okay, so that is the meaning of hawk. Okay, children. So as we have learned few of the dictionary words today, okay, we'll be continuing with the rest of the words in our next video. And see you soon in my online classes. Okay, children. But now I'm giving you a short work to do. The things that we discussed. Okay, that is abroad. Okay, carrying on, beam, depth, fall, fetch, gather, guilty, hawk. Okay, these words